So you're coming out? Hi, दोस्त हो तो ऐसे. It means I'm glad to have friends like this. Onion and zucchini. Like it? ये पीछे जो बी फार्म है यहाँ पे सारे लोग बी फार्मिंग कर रहे हैं. सब वॉलंटियर्स ही हैं यहाँ पे. That's it? That's it. Yeah, And that's the pizza is almost ready. Let's go on. Yeah. And more. Just 20 euros. We'll be still friends after that. Depends. आज चल रही है यहाँ पे बी फार्मिंग. ये सब हमारे होस्ट के ही फार्म्स हैं. बी फार्म्स इन बॉक्सेस में रखा जाता है बी यानी मधुमक्खियों को. और एक ये हमारे अभी लियो भाई हैं जो काफ़ी इसको करते रहते हैं अक्सर. काफ़ी लॉन्ग टर्म वॉलंटियर हैं. तो ये 2 नए लड़कों को लेके आए हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बताने के लिए कि कैसे कैसे बी फार्मिंग की जाती है. ये पीछे जो बी फार्म है यहाँ पे सारे लोग बी फार्मिंग कर रहे हैं. सब वॉलंटियर्स ही हैं यहाँ पे. एक स्पेशल टाइप की ड्रेस डालनी पड़ती है यहाँ पे जिसको डाल के ही ये प्रोटेक्शन के तौर पे डालनी पड़ती है ताकि अगर बीज अटैक करें तो उससे बच पाएँ. तो अभी सब लोगों ने डाली हुई है. मेरे पास ड्रेस नहीं है, मैं तो ऐसे ही चलो पास में आके खड़ा हो गया. पर बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा पास मत आओ, मतलब डर हो सकता है कि अगर एकदम से अटैक कर सकते हैं. मैं कहा मैं भागूंगा बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से अगर ये अटैक करती है तो. लियो भाई जो यहाँ पे अक्सर यहाँ पे इन बीज को संभालते हैं वो बोल रहे हैं कि अगर किसी दिन आपको एक डिटेल वीडियो बनाना हो, अच्छे से देखना हो एक एक स्टेप इसमें कि कैसे बी फार्मिंग होती है तो कह रहे हैं यू आर मोस्ट वेलकम. तो अभी आज के लिए इस बार मैं बी फार्मिंग में इतना ही दिखाऊंगा अभी थोड़ा सा. लेकिन अगले वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में आने वाले इसी सीरीज़ के वीडियोस में वो कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा. तब लियो भाई से ही मिलवाऊंगा और डिटेल में देखेंगे कि कैसे बी फार्मिंग की जाती है. तब मैं भी थोड़ा सा भाई भी थोड़ा प्रोटेक्शन लेके ड्रेस वगैरह डाल के तब अंदर जाएंगे पास में. अभी तो भाई इतनी इससे ज़्यादा पास नहीं जा सकता. This stuff. Yeah. Onions and zucchini. Like it? Yes. So Lawrence, how do we make this pizza? So first we have the dough. Mm-hmm. It's made out of flour, pizza flour, Okay. water, and salt and sugar and olive oil. Mm-hmm. Then you let it raise for 1 hour, Okay. and then after that you make like little pieces Mm-hmm. and flat them like a pizza. Mm-hmm. After that comes the tomato sauce with oregano and salt, pepper, and garlic. Okay. After that you can just put what you prefer, like salami, Mm-hmm. and cheese, of course. Okay. Yeah. Lots of cheese. A lot of cheese. And after that, it comes in the oven. Okay. So here is our master baker, actor from Mexico. Can you tell us something about baking? Yeah, so the pizza takes around 3 minutes average on the oven. It depends on how hot it is. Okay. What you want is to wait until the board is kind of black before it gets black, so you can turn it. Mm-hmm. And you go like take half of the pizza, so you can turn it, take it back a little bit, Okay. and turn it little by little until every part of the pizza is baked. It's done. Okay. That's it. That's it. Yeah, And that's the pizza is almost ready. This one is ready? Or Well, it will take around 2 more minutes. I 2 more minutes. Okay.
तो आज यहाँ पे नए 2 ग्रीन हाउस बनाए जा रहे हैं। तो इसमें जो ब्लू वाली इसमें ड्रेस में है, जो कमर ड्रेस है, ये हमारे होस्ट हैं फर्नांडो जी, और इन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया हुआ है जो उनकी हेल्प करने वाला है आज ग्रीन हाउस बनाने में। और इधर की मशीन आ चुकी है हमारी ट्रैक्टर भाई साहब, ये भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। और उधर कुछ और वॉलंटियर्स हैं जो भी काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ग्रीन हाउस के लिए ही। अब यहाँ पे पोल ड्रिलिंग करने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे सारे यहाँ से लेके पीछे तक पूरा ग्रीन हाउस बनेगा, एक 30 मीटर का, 6 मीटर ऐसे, और आई थिंक 2 या 3 बनाने वाले हैं। तभी यहाँ पे इस ट्रैक्टर, इस ड्रिलिंग मशीन की मदद से हम ड्रिल करेंगे और यहाँ पे से पोल्स खड़े करेंगे लंबे लंबे, फिर ग्रीन कलर का नेट लगा दिया जाएगा जिसके अंदर प्लांटेशन होगी। ये हमारे होस्ट भाई साहब हैं फर्नांडो जी, ये एक वॉलंटियर है थॉमस भाई इटली से, और एक ही पीछे जो उनकी हेल्प करने आए हैं भाई साहब। No, don't. Okay, I'm really don't. I'm really. Yeah? Okay, perfect. Let's go on, let's go on. Yeah. And more. It's looking good, eh? Yeah, looks pretty. This is, by the way, this is a really quick job. Yeah, right? पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है। I'm sure it's not so quick, okay? No, no, no. Yeah. If you just hold it, we don't have all the material. Yeah, the drilling machine. Without the drilling machine, it's gonna take a lot longer. This is Ibrahim from Sierra Leone. Really nice dancer. Okay, so yeah, let's bring one material, okay? And then 1, 2, 3, 4. Okay, and then we'll do this. Okay, every person bring one, okay? Here comes a strong man, Hector from Mexico. There we go. Okay, more. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Okay. Let's go. सो अभी वेंदास नोवा सिटी में आए हैं कुछ ऑरेंजेस पिक करने अपनी होस्ट के साथ। यहाँ पे कुछ ऐसे फार्म्स हैं जिसमें से हमारे को कुछ ऑरेंजेस मिल जाएंगे। किसी का घर है। Oh, that's why you got that. ट्राई कर रहे हैं इनको बुलाने की ताकि हम यहाँ से ऑरेंजेस ले पाएँ अपने फार्म के लिए, सब वॉलंटियर्स के लिए। yeah. काफ़ी दिन से यहाँ पे रह रहा था तो बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो आज यहाँ पे आसपास कोई बार्बर शॉप तो है नहीं, तो लेकिन यहाँ पे एक भाई मिले मुझे, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि कैसे बालों को काटा जाता है, कैसे हेयर कट किया जाता है। तो अभी वही प्लान है, वो थोड़ी सी हेल्प करेंगे हेयर कटिंग करने में। और अभी मैं बाल थोड़े गीले कर लेता हूँ, और थोड़े बहुत हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं कुछ हेयर कट करने के लिए, अपना ट्रिमर्स वगैरह हैं, उनके इस्तेमाल से आज कोशिश करते हैं हेयर कट करने की अपने आप से। That's kind of professional, man. Yeah. Yeah. Let's start. Let's start. Okay, anders. Yeah.
the long one. That it doesn't cut nothing. Maybe put a smaller one than this. This doesn't work. This is Try also the other too one. big, I guess. What the fuck? No, it doesn't work. Yeah. Is it cutting something? No. I'll try the other way. Okay. Not really. Fuck. Yeah, they're not being cut. That's all. Something is cutting because I can see. Yeah, something is there, but it's all like this. Okay, seems better. Maybe you can, try with the comb. Just put the comb and then over this like this. Yeah. That will be better. Yeah. Is it cutting? Yeah, a bit. Hair cutting in Vendash, no wash. Need to do it like 8, if it's like 4 or 5 also, you can do it. So. Working very good or like okay? Okay. It's a bit little. Yeah. The air remains like stuck in it. His posture. Yeah. He looks like a professional. Yeah. Now the hairs are also like shaping up. Yeah. Is it recording? Yeah, it is. Okay. You wanna say hi to your camera? Hi, दोस्तों तो ऐसे. It means I'm glad to have friends like this. Yeah. Friends that cost 20 euros. We'll be still friends after that. Yeah. Depends. In every country I go, I cut my hair and They're different. but this is totally different experience when. Oh my god. But yeah. It's pretty difficult with other people. Yeah. With me, it's like I know how to take my hair and Yeah. but your hair are not so difficult to understand. Yeah. There are some people that you can really understand where they start, when they begin, when they finish. तो एकदम बढ़िया बाल काट दिए हैं भाई ने. और भाई बोल रहा था कि अब आप बिल्कुल इटालियन लग रहे हो. जिस भाई ने काटे हैं इसका नाम है थोमस से, भाई इटली से है. और अब मुझे बाल जब इसने काटे उसके बाद बोल रहा है कि आप बिल्कुल इटालियन लग रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर इटालियन भी इसी टाइप के बाल रखते हैं. तो मैंने कहा कि भाई इटालियन बंदे ने बाल काटे हैं तो इटालियन की तरह ही काटेगा. तो बाकी सही सेट हो गए हैं, मतलब बिल्कुल परफेक्शन पे तो नहीं है बट स्टिल ओके है. ओके रिपोर्ट है. इससे बढ़िया बाहर जाता और
यहाँ से तो शहर भी बहुत दूर है और वहाँ पे बार बार मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं कहा ठीक है चलो घर पे काट लेते हैं, एक नया एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और पैसे ही बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बाल काटने भी बहुत महंगे होते हैं। बाकी आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी हमने नए नए टाइप के एक्सपीरियंसेस देखे, पिज़्ज़ा वगैरह खाया, काफ़ी चीज़ें करी, बी कीपिंग देखी और लास्ट हमने बाल भी कटवा लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर करके बताना ज़रूर कि लगा कैसा। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।